Assalamu alaikum, everyone. Welcome back to the RME podcast. I'm your host, Ayan Imtiaz, and today I have a very valuable colleague with me. His name is Dr. Tayyab Naveed, and we're going to discuss a topic which is very normal and very much discussed, that is low back pain, its diagnosis, and its management. So, Dr. Tayyab. Yes. First of all, thank you so much, Dr. Ian, for such an great introduction about me. I'm thankful to you as well, to my esteemed podcast team, that they have organized this thing so that we can talk about this a common issue that is being observed by every clinical every physician in his clinical practice every day. Almost you can say almost every day in his everyday cases. Yes. So, thank you for that, Tayyab. So, Tayyab, I want to ask some questions regarding this topic today. So my first questions will be that what are the types of the low back pain one can have? Because there are a lot of types of pain. Some can be neural, as I know, and Mhm. some can be like physical. Yeah, yeah. So trauma related. So Yes, sir, yes. can you please just elaborate about that? Yeah. Before going मैं आपको बताने से पहले टाइप्स बताने से पहले मैं सिर्फ आपको ये कुछ बताना चाहता हूँ कि what are the predisposing factors that cause lower back pain, especially that is happening in our generation. In our especially young adults, male and female, and those those elders that are not getting enough nutrition. So the predisposing factors for that is tension, stress, whether it's emotional stress, whether it's mechanical stress, smoking. Then you have some other like congenital anomalies and things like that. So the causes can be different for every type. It has its own causes, but the general predisposing factors are these which I have just told to you now. Uh, अगर अब हम टाइप्स की तरफ आए द a major misconception in our patients and moreover in our new students, वो एक conception ये है कि in your back every pain is related to the bony structure that is your spine. बिल्कुल. ठीक है, आप किसी को भी देखोगे, आप उससे पूछोगे या कोई भी आपके पास अगर पेशेंट आता है, यू आर सिटिंग इन अ क्लिनिक, आपके पास पेशेंट आता है, ओ डॉक्टर साहब मेरी जो है ना वो कमर के मोरों में तकलीफ हो गई। ठीक है, कमर के जी. मोड़ों का मतलब ये है कि हाँ. आई एम हैविंग अ पेन इन माय वर्टिब्रास। बट द रियलिटी इज कि आपके जो स्पाइन है इट यू हैव मेनी पैरास्पाइनल स्ट्रक्चर्स, यू हैव मसल्स, यू हैव लिगामेंट्स, यू हैव जॉइंट्स, you have big joints that help you in mobilizing in daily on daily life work. You're lifting some object, you're sleeping, you're doing anything, you for as in climbing up, climbing down. So there are many structures, not only a bony spine or bony structure is only helping you. So lower back pain types में आपके पास फिर इसमें आ जाती हैं sciatic pain, you have facet joint pain, you have muscle spasm, you have sacroiliac joint pain, you have discogenic pain, and some pains that are caused by some that it's not very common, but you can also add in this like from some infections like TB and so on. Yes. So doctor, as I know, there's a term known as sciatica. Yeah. So can you please tell me what are the types of sciatica and what does it mean, and what does pseudostatica mean? Yeah. Please. Okay. So the most common presentation in your clinic, in a doctor's clinic, is about sciatic pain, whether it's original sciatic pain or whether it's pseudo or false sciatic pain. That is not actually sciatic pain, but it can be presented as a sciatic pain, but it's actually not a sciatic pain. So this is a basic difference. Now the term sciatica is basically you have a very major nerve, एक बहुत बड़ी nerve आपकी जो पीछे जो lumbar vertebrae है वहाँ से एक बहुत major nerve निकलती है. This nerve actually known as sciatic nerve, जो कि आपकी from your posterior lateral course आपके साथ जा रही है till your foot, dorsum of foot and thumb तक जो है वो आपको supply करती है for your motor activities and so on. So whenever you have a direct compression or a problem having by a problem a pain that happens after compression or anything that is teasing the sciatic pain, the sciatic nerve actually,
this pain is this term is known as this is termed as sciatica. Sciatica. So what is pseudo-sciatica? Now, pseudo-sciatica is this thing. It presents as sciatic pain, but it is actually not a sciatic pain. हमें क्यों डिफरेंस करना है? बिकॉज बाय डिफरेंसिंग दिस थिंग आप एक होल मैनेजमेंट चेंज हो जाती है, पेशेंट की सिनेरियो चेंज हो जाता है, मैनेजमेंट सिनेरियो चेंज हो जाता है, ट्रीटमेंट ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, और लाइफ आउटकम्स उसमें चेंज हो जाते हैं. अब उसमें आपके पास आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल इफ आई से फेसिड जॉइंट पेन विच इज मोस्ट कॉमन. उसको उर्दू में हम एक टर्म कहते हैं चुक, कमर में चुक पड़ गई जी, मैं झुक के कुछ उठा रहा था तो अचानक स्ट्रेन आया तो मेरी कमर में चुक हो गई, मैं जो है ना सीधा नहीं हो सका, वो एक दर्द निकल आई. So this term is mostly referred as facet joint pain. अब facet joint pain क्यों उसको pseudo-sciatic कहा जाता है? कि उसकी पेन जो है ना वो आपके बैक से शुरू होती है and it comes to the anterior aspect of your thigh, थोड़ी सी रेडिएट करती है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट यही कहता है कि जी मुझे sciatic पेन है. एंड नॉट ओनली दिस, मोस्ट ऑफ द टाइम जो फिजिशियन है अगर उसके पास इस चीज़ का मतलब जिसे कहते हैं कि आप या बैकग्राउंड नॉलेज कह लें, या अगर उसने इतने केसेस अभी इनकाउंटर नहीं किया, या एक मिसकंसेप्शन है जैसे मैंने आपको पहले बताया था, तो ही कैन सिंपली मिसडायग्नोज द पेशेंट. A patient with a facet joint pain, he will refer him as a sciatic pain, and फिर उसके बाद उसकी एमआरआई शुरू हो जाएगी, विच इज़ नॉट क्वाइट गुड ऑप्शन. क्या अब उसको आपको फैसेट जॉइंट को ट्रीट करना चाहिए, आप उसका sciatic पेन के उस पर करके ट्रीट करेंगे. एंड देन after giving the treatment of sciatic pain, what will happen? That mostly in the world, as research says that 50% of the patients are now mostly living a disabled life, not a complete disabled life, but with pain. Why Yes. pain? Because it's uh, wrongly diagnosed, misdiagnosed most of the time. Mishandled. Misdiagnosed. So getting a treatment of sciatic pain, but it actually was a pseudo-sciatic, a false sciatic pain by a sacroiliac joint or by a facet joint. Yes. So, Tayyab, the next question will be regarding the same topic actually. How do you manage the sciatic pain? Sciatic pain, yeah. Now, coming for the treatment, अगर अभी recently acute start हुई है, ठीक है, और you are very sure you have physically examined the patient, आपने physically patient को examine किया, you have done x-rays और MRIs. well, अगर sciatic pain है तो आपको x-ray में नहीं MRI में जो आपको नजर आती है कि there is a direct compression on sciatic nerve. तो अगर वो है तो फिर उसमें आपके पास ट्रीटमेंट जो है ना वो उस हिसाब से आप शुरू करेंगे. फॉर एग्जाम्पल इफ इट्स एक्यूट, देन यू विल स्टार्ट फ्रॉम NSAIDs. आपके पास NSAIDs हैं, बट यू मस्ट नो दैट कि यू विल स्टार्ट फ्रॉम सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर NSAIDs. ठीक है, सेलेक्टिव NSAIDs के साथ जाएंगे सो दैट कि आपकी जो गैस्ट्रिक लाइफ है, जो गैस्ट्रिक मतलब यानी जो गैस्ट्रिक एरिया आपको स्पेशली स्टमक है, ये वो उसकी जो म्यूकोजल लाइनिंग है वो डैमेज ना हो. आपके जो रीनल फिल्ट्रेशन है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है, वो डैमेज ना हो. ठीक है, तो आप सेलेक्टिव कॉक्स टू इनहिबिटर्स की तरफ जाएंगे, विच आर एटारिकॉक्सिब, सेलिकॉक्सिब भी उसमें आपके पास ऑप्शन है. बट देखें इसमें एक चीज़ ये है कि जब sciatic पेन स्टार्ट होती है ना, तो बेसिकली sciatic पेन इज क्या, नर्व कंप्रेस हो रही है, ठीक है, नर्व डैमेज हो रही है, न्यूरोपैथी उसमें स्टार्ट हो रही है. तो न्यूरोपैथिक पेन मोस्ट ऑफ द टाइम NSAID से नहीं कवर होती. इसमें साथ आपको कुछ और चीज़ें ऐड करनी पड़ती हैं. Tayyab, like I just want to interrupt you for a second. I'm sorry. If a layman, जो बंदा normal है, if he's not like a doctor, practicing doctor like that, and if he has that kind of a pain, so are there some home remedies that they can also manage? या मैं मैनेजमेंट की तरफ इसी तरफ अभी आने लगा था कि फर्स्ट मैं शुरू किया कि डॉक्टर के पास जो आपके पास अगर पेशेंट आता है तो अगर हम उसकी बात करें कि होम रेमेडीज़ क्या हैं, तो होम रेमेडीज़ में देखें कोई ख़ास रेमेडी नहीं है हमारे पास sciatic पेन को करने के लिए, अदर देन दैट कि आप रेस्ट करें, अदर देन दैट कि आप अपना जो है पोस्चर आप ठीक रखें, अदर देन दैट कि आप कुछ मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप घर में हैं तो डेफिनेटली आपके पास पैराडोल वगैरह है जो आप यूज़ कर रहे हैं फॉर पेन रिलीफ, आपके पास कोई ट्यूब्स हैं, ऑइंटमेंट्स हैं जो आप यूज़ करते हैं. बट sciatic पेन बिकॉज इट्स अ डीप स्ट्रक्चर. हाँ, अगर मैं कहूँ कि जी जॉइंट पेन थी, जॉइंट पेन में आप जो है कोई लोकल टॉपिकल चीज़ें आप यूज़ कर रहे हैं, जैसे आपको पता है हमारे यहाँ people use oil, people use this. But you are not actually going deep down or not actually correcting the deep down issue that is causing the problem, right? इसलिए आपको best thing is to go to visit a doctor. Why you have to visit a doctor?
इसलिए कि अगर प्रोलॉन्ग कंप्रेशन ऑफ शेटिक नर्व शुरू हो जाए, वेरी प्रोलॉन्ग कंप्रेशन हो रही है, एक बहुत न्यूरोपैथिक पेन स्टार्ट हो गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो होम रेमेडी से वो शुरू ठीक भी नहीं होती। मैंने आपको बताया कि इवन कैंसर से भी वो कवर अप नहीं होता। तो उसमें देयर इज अ चांस कि आपके पास जो है इवन मोटर वीकनेस शुरू हो जाएगी। यू हैव अ चांस कि आपका लिम्ब जो है वो वीक हो जाएगा, नमनेस शुरू हो जाएगी, और काफ़ी सारी उसमें फिर रेस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकते हैं, रिफ्लेक्सेस कम हो सकते हैं। ठीक है, तो उन सारे कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए जब आपके पास इस चीज़ अभी स्टार्ट हुई है तो आपको उस चीज़ को उसी वक्त कुछ अरसे में इरेडिकेट करना है, रेदर देन कि आप उसको प्रोलॉन्ग करेंगे। इसमें अब मैनेजमेंट की हम बात कर रहे थे, तो आपके पास ड्रग्स, जैसे मैंने एनसेड्स की बात की, एनसेड्स के बाद आपके पास ओपियाइड्स, वीक ओपियाइड्स आते हैं। देयर इज अ कॉम्बिनेशन नोन एज पैरासीटामोल विद ट्रेमाडोल। ट्रेमाडोल इज अ वेरी, समटाइम इट इज डिनोटेड एज अ नॉन ओपियाइड। ठीक है, अ वेरी वीक ओपियाइड जिससे आपकी पेन जो है कवर अप हो जाती है। सेकेंडली, न्यूरोपैथिक पेन के अंदर आप यूज़ करते हैं प्रीगैबलिन। ठीक है, गैबापेंटिनॉइड्स आप इसमें यूज़ करते हैं, विटामिन B12 मेथिकोबोल के नाम से आता है, आप वो यूज़ करते हैं फॉर नर्व सूथिंग। अच्छा, अब अगर नहीं ठीक हो रहा, क्रॉनिक हो गया, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, एंड पेशेंट इज नॉट, ही स्टिल इन पेन, वो थोड़ा सा चलता है, ठीक है, उसको पेन शुरू हो जाती नॉट है। रिस्पॉन्डिंग वेल। वो, क्योंकि स्टैटिक पेन ऐसे ही होता है कि आप थोड़ा सा चलते हैं फिर आपको पेन शुरू होती है अलोंग द कोर्स ऑफ द नर्व। ठीक है, जिस लेवल, फॉर एग्जांपल अगर L4 L5 लेवल की डिस्क बल्ज है, तो वो L4 L5 डर्माटोम तक जाएगी। ठीक है, पेशेंट कहेगा जी मेरे पिंडली तक जाती है, ठीक है, पाँव में नहीं जा रही, उसके ऊपर पर पेन। अब हो गई ये कि ही इज नॉट एबल टू इवन वॉक फॉर 5 मिनट्स, उसको बार बार बैठना पड़ रहा है, बहुत सारे मसाइल शुरू हो रहे हैं। तो उसमें आपके पास फिर दो ऑप्शन है, वन इज लेस इन्वेसिव एंड द सेकेंड थिंग इज सर्जरी। लेस इन्वेसिव थिंग इज कि आप उसमें स्टेरॉयडल इंजेक्शंस होते हैं जो आप एग्जैक्टली एपिड्यूरल स्पेस में लगाते हैं जहां पर नर्व कंप्रेस हो रही है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास लेटरल रिसेस, डिस्क बल्ज हुई है, डिस्क हर्निएशन हुई है, वहां से वो लेटरल रिसेस के ऊपर नर्व प्रेस कर रही है एग्जिटिंग फोरामिना से। ठीक है, तो वहां पर आप स्टेरॉइड्स डालते हैं, सम स्पेसिफिक स्टेरॉइड्स हैं, बहुत सारे नहीं डालते, आप कैलकुलेटेड डोज के अंदर डालते हैं। यू नो व्हाट इज द डोज, राइट प्लेस एंड राइट मैन आप चूज करते हैं, आपने उसको दी है। 80% ऑफ द पेशेंट्स के अंदर वो विद दैट थेरेपी सिर्फ एक इंजेक्शन लगता है, 80% ऑफ द पेशेंट उसी से ठीक हो जाते हैं। जो 20% रहते हैं उनका रिजीम ये है कि उनमें आप आफ्टर 2 वीक्स और आफ्टर अ मंथ, अगर पेशेंट आपके पास वापस आता है, वो कहता है कि डॉक्टर साहब मुझे आई हैव रिलीफ, बट मे बी द रिलीफ इज 60 to 70%, और मे बी द रिलीफ इज लेस देन 50%, देन यू अगेन आप एक और जो है वो लेते हैं, एक और इंजेक्शन लगाते हैं। सो आप इस तरह के 3 इंजेक्शन लगाते हैं। आफ्टर 3 इंजेक्शन अगर स्टिल द पेशेंट इज नॉट गेटिंग रिलीफ फ्रॉम हिज पेन, देन द लास्ट ऑप्शन इज सर्जरी, के उसमें आप लेमिनेक्टमी करेंगे, डाइसेक्टमी करेंगे, आप वो पार्ट निकाल देंगे डिस्क का। ठीक है, या प्रोट्रूजन जो हुई हुई है वो आप निकाल देंगे, या पीछे से बोन जो पीस है, लेमिना जिसे कहते हैं, वो लेमिना आप निकाल देंगे, वहाँ पर आप रॉड्स लगा देंगे, और जो उसको प्रेशर जो आ रहा है नर्व का वो खत्म हो जाएगा, नर्व का जो प्रेशर है वो खत्म हो जाएगा। So thank you for that, Tayyab. I want to ask the last question for this interview because I know you are busy. So, what is the management of pseudostatic pain? Hmm. Now about the pseudostatic pain, as I've discussed earlier, in pseudostatic pain, you have facet joint pain, you have uh, sacroiliac joint pain, sometimes piriformis syndrome as well, and some other associated structures like that. So sometimes cluneal nerve pain as well. So the management about that is, if it's a facet joint pain, facet joint pain actually as in structure wise, it closely resembles to the knee joint, as it is known as synovial joint, but its shape is very small. Its size is very small. Because of that, you cannot perform any surgery. First of all, you have to stop this happening by correcting your posture, correcting your neck's posture, your back's posture. Since we are talking about the lower back pain, तो आपको ऐसी सीट चाहिए कि जिसमें आप you're not sitting and you're just going down in it. See, you are sitting like this. This chair is very good for about the posture Posture. and so on. The second thing about the treatment is, if a person came to you with an acute pain, for example, uh, since I know that you do a lot of gym, mashallah, may Allah give you more strength. Uh, Suddenly, you are in the gym, you bend down, you lift a heavy dumbbell, but because of a negligence, you lift it with not a good posture, Wrong posture. with the wrong That posture, that right? happens a lot in the Yeah, gym. Yeah. it happens a lot in gym.
तो जब आपने उसको लिफ्ट किया सो यू हैड ए स्ट्रेन ऑन योर जॉइंट. अगर जॉइंट वीक हुआ किसी भी वजह से, नॉट न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी नहीं थी, जो भी था, थोड़ी सी आपने जो है वो कैल्शियम कम लिया हुआ है, जो भी, जो आपको पता है न्यूट्रिशन आजकल इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो स्ट्रेन आया. अब वो जॉइंट आपका जो हाइपरट्रॉफी, उसमें जो है हाइपरट्रॉफी होगी, फ्रिक्शन हुई, नाउ इट्स इन्फ्लेम्ड. अब उसकी एक्यूट में ये है कि आप थोड़ा सा रेस्ट दें बॉडी को, कुछ लोकल ऑइंटमेंट्स हैं आप वो यूज़ करें, ठीक है. कुछ एनसेड्स हैं, जैसे मैंने सिलेक्टिव उनकी बात की, आप वो यूज़ करें फॉर अप टू 1 वीक, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट गेट्स हील्ड ऑन इट्स ओन. लेकिन अगर वो नहीं होता तो उसमें फिर आपके पास नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट यही है, एंड द ओनली ट्रीटमेंट इज़ दैट कि आप उसमें इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन लगाएं. एंड इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन के अंदर आप स्टेरॉइड डालते हैं विद लोकल एनेस्थीसिया, कि उसके अराउंड पेरी आर्टिकुलर स्पेस एंड इनसाइड द जॉइंट आप उसमें जो है वो सोल्यूशन डालते हैं. मतलब आप वो देते हैं, स्टेरॉइड्स देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, और इससे ये होता है कि इट टेक्स इफेक्ट इन आफ्टर 24 आवर्स. 24 आवर्स लगते हैं अपना इफेक्ट स्टार्ट करने में, और इन 2 वीक्स वो जो जॉइंट, जो हाइपरट्रॉफी हुई थी, इन्फ्लेमेशन हुई थी, वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ में आ जाता है, एंड यू विल बी गुड टू गो. बट द थिंग इज दैट कि every pain physician who ever practice pain, he never promises to the patient that this treatment is forever. Why it's not forever? कि आप अभी ठीक हो गए, now you are good, but again you have done something wrong. आपने वही रॉन्ग पोस्चर लिया, आपने कुछ और किया, किसी भी वजह से दोबारा से वो मसला आ सकता है, वो एक्टिवेट हो सकता है, वो मसला आ सकता है, ठीक है. तो उसके लिए ये है कि आपने कुछ पोस्चर रखना है और अच्छी न्यूट्रिशन रखनी है. सेम अबाउट सैक्रोइलियक जॉइंट पेन. सैक्रोइलिक जॉइंट पेन में भी यही है कि वो आपको उठते बैठते हुए ज़्यादा दर्द होगी, ठीक है. तो उसके अंदर भी मैनेजमेंट उसकी भी ये, बिकॉज उसका 1/3 पार्ट जो है वो साइनोवियल है, 2/3 फाइब्रस है, ठीक है. कोई सर्जरी नहीं उसकी हो सकती. द लास्ट थिंग इज कि अगर वो एक्यूटली नहीं ठीक हुआ, एक्यूट नॉर्मल ओरल ट्रीटमेंट से वो नहीं ठीक हुआ, देन यू हैव टू गो फॉर इंटरवेंशन. सेम इंट्राआर्टिकुलर इंजेक्शन आप उसमें लगाएंगे, वही सॉल्यूशन आप उसमें देंगे, बट विद द करेक्ट डोज, ठीक है. डोज आप देंगे. सर्जिकल प्रोसीजर कोई नहीं है? नो, फॉर सैक्रोइलिक जॉइंट यू डोंट हैव एनी सर्जिकल प्रोसीजर अदर देन दैट कि हाँ ट्रॉमा हुआ है जिसमें ब्रेक डाउन हो गई, कुछ वो तो एक अलग चीज़ है. बट आई एम टॉकिंग अबाउट के एक्यूट पेन हुई है, कुछ हुआ है, कुछ उठाया आपने, कुछ स्ट्रेन हुआ है, क्रॉनिक पेन हो गई है, बैठ के हो गई है, आपका बैठने का काम ज़्यादा है, उसमें बहुत, और खासतौर पे हमारे जो आजकल जो फीमेल्स हैं, प्रेग्नेंट वुमेन आफ्टर बर्थ, उनको Obviously. बहुत ज़्यादा जो है बैक पेन स्टार्ट होती है. वो बेसिकली मोस्टली जो है वो सैक्रोइलिक जॉइंट की पेन होती है, बिकॉज इट्स अ वेरी बिग जॉइंट. तो उसकी सर्जरी कोई नहीं है, ट्रीटमेंट उसका लास्ट जो है वो यही है. जी. Yeah. So Tayyab, firstly I'll thank you for shedding the light on this topic for today, because मेरे को भी लगता है I have gained a lot of knowledge, and I hope Thank the you. audience has gained the same. And signing off today, I just make dua for us, and we'll make dua for you, because this is the holy month of Ramadan. Ramadan Mubarak to all of you guys, and signing off. Allah Hafiz. Allah Hafiz. Ramadan Mubarak.